different parts of IR spectrophotometer. So it will look like this. ये जो है स्ट्रक्चर it will look like this IR. यहाँ पे सब इसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में आता है. रेडिएशन सोर्स हो गए. IR instrument will look like this. So in that you will have source, monochromators, detectors, filters. So everything will be in the same instrument. इसमें सब कुछ में इसमें सैम्पलिंग सेल भी आएगा, IR रेडिएशन आएगा, लैंप आएगा, डिटेक्टर वगैरह सब इसमें रहेगा. बाद में डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे होगा. So we'll see the parts of your IR instrument. Different parts of IR spectrophotometer. So जैसे UV spectrophotometer में we have seen that in the UV spectrophotometer. So there is a radiation source, there is a monochromators, there are filters, there are detectors, etc., etc. So same thing will be here also. So radiation source will be there because you need a particular wavelength radiation. You are doing a IR spectroscopy, so you need radiation or radiation source that can emit in the infrared region. Again यहाँ पे भी radiation source रहेगा आपका. उसके बाद में क्या रहेगा आपका, मोनोक्रोमेटर्स रहेंगे, उसके बाद में सैम्पलिंग सेल रहेगा, उसके बाद में डिटेक्टर रहेगा, डिटेक्टर के टाइप रहेंगे, डिटेक्टर्स, उसके बाद में इंटरप्रिटेशन. So same flow will. So different parts of your IR spectrophotometer. So name of part, then types, and then comment. Name of parts, types, and so first we'll go one by one. Radiation source. So what is the role of radiation source? That source that will emit the radiations in the particular wavelength. The source must be intense and enough radiations and the desired region of wavelength should be covered. Qualities of ideal source की qualities क्या होनी चाहिए कि उसने intense emission होना चाहिए उसका. Enough radiations, must be intense enough radiations, and that must be extend over a desired wavelength. Now you are doing IR spectroscopy, so you need a radiations in the range of 2.5 to 25 micron. So that source must be enough intense. The intensity of radiation emitted by the source must be enough and must be within a IR range. ये तो क्या है कि सोर्स आप सिलेक्ट करेंगे, उसने इमिट किया 200 to 400 नैनो, वो तो ईवी रेंज में चला जाएगा, आपका कंपाउंड एब्सॉर्ब भी नहीं करेगा. सो व्हाट you are doing IR analysis, so source for IR that must be emit radiation in the IR region. So what are the different sources for radiation in the IR? So first source is nothing but the incandescent lamp. First one is nothing but the incandescent lamp. So it is like an ordinary in a condition lamp, normally used for the far IR, and it has a low spectral emissivity. So incandescent lamp is one of the source for IR. So ordinary condition lamp. Okay, ये एक ordinary condition lamp होता है used for the far IR. So far IR मतलब near about the visible range. So normally ये tungsten वगैरह use करते हैं. Main two important radiation source for IR. These two are the main two important. Second one is a nurse blower. So it consists of a hollow rod of rare earth oxides such as zirconium, thorium and yttrium. इसमें क्या रहेगा, एक hollow rod मतलब एक छोटा सा वायर रहेगा, किसका, made up of rare earth oxides like zirconium, thorium, yttrium. इनके ऑक्साइड्स, थोरियम के, एट्रियम के या फिर जिक्रोनियम के ऑक्साइड का मेटल का ये छोटा सा वायर रहेगा जिसको अपन हीट करेंगे. hollow rod of rare earth oxide like zirconium, thorium and yttrium, it is heated up to 1000 to 1800 डिग्री सेल्सियस. इसको हीट करना पड़ता है. ये वायर को हीट करेंगे, रेडिएशंस इमिट करेंगे. hollow rod of rare earth oxide like zirconium, thorium, yttrium is heated up to a 1 to 1.8 thousand degrees Celsius temperature, and it emits the radiation in the range of 7100 centimeter inverse. तो ये क्या है, IR रेडिएशन. तो मतलब ये पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही इमिट नहीं करता है, इस रेंज में करता है. सो यू नीड अ मोनोक्रोमेटर बाद में. सो क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. रियर अर्थ ऑक्साइड लाइक जिक्रोनियम, थोरियम, यट्रियम आर द कंपोनेंट ऑफ फॉलोइंग रेडिएशन सोर्स. इसमें आएगा ऑप्शन में ए, इनकैंडेसेंट लैंप, नर्स ब्लोअर, ब्लोअर सोर्स. तो क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, तो इसलिए ये सब कुछ लिखा है, बोल में लिखा है, फिर भी आपको समझना नहीं है.
सो नर्स डोर. नाउ सेकंड इज अ ग्लो बार सोर्स. तो अभी इसका डायग्राम यहाँ पे लिखा, डायग्राम दिया नहीं मैंने, क्योंकि डायग्राम देखने के लिए आप बुक्स में जाओ और देखो. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर जीपैट. डायग्राम वहाँ पे नहीं आएगा. डायग्राम आपको लिखना है तो सेमेस्टर में लिखो. ग्लोबार सोर्स क्या है दूसरा? ग्लोबार. ग्लोबार GLOBAR. ग्लोबार सोर्स. ग्लोबार सोर्स. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ रॉड ऑफ सिंटर्ड सिलिकॉन कार्बाइड. क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है. ए रॉड ऑफ सिंटर्ड सिलिकॉन कार्बाइड ऑफ 50 mm. छोटा सा वायर रहेगा सिंटर्ड सिलिकॉन कार्बाइड का. व्हेन दिस सिंटर्ड सिलिकॉन कार्बाइड इज हीटेड अप टू 1300 to 1700 degrees Celsius, so it will strongly emit a radiation in a range of 5 to 00 centimeter inverse, and this is a self starting. ये खुद से स्टार्ट होता है, उसको स्टार्ट करने का जरूरत नहीं. नर्स ग्लोवर, okay, it is a self starting. Unlike nurse glower, main drawback is a less intense. तो नर्स ग्लोवर क्या है, इसको स्टार्ट करना पड़ रहा है. इट इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग. ग्लोबल सोर्स क्या है? सेल्फ स्टार्टिंग. याद रखो इसमें क्वेश्चन आता है कि अर्थ ऑक्साइड, जिक्रोनियम, थोरियम, यट्रियम किसमें होता है? नर्स ग्लोवर में होता है. सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बाइड का रॉड कहाँ पे? सिंटर्ड सिलिकॉन कार्बाइड रॉड. देन अगेन नेक्स्ट इज अ मर्क्यूरी आर्क. Special high pressure mercury lamps are used to emit the radiation in the region, okay, in the region less than 200 centimeter inverse. So source कितने हैं याद रखो. source for IR spectrometer कितने लाइट सोर्स होते हैं? so incandescent लैंप होता है. दूसरा होता है नर्स ग्लोवर. तीसरा होता है ग्लोबल सोर्स. चौथा होता है मर्क्यूरी आर्क. now next one is a monochromators. now these radiations emitted by the radiation source, they are not a मोनोक्रोमेटिक. ये मोनोक्रोमेटिक नहीं होते, एक रेंज में इमिट करते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा है 5200 के रेंज में इमिट करता है, मतलब उसके नीचे वाले भी इमिट करते हैं, मतलब 1400 ऐसे. सो यू नीड अ पर्टिकुलर वेवलेंथ. सो मोनोक्रोमेटर्स filters are desired. What are the role of monochromator? They will give you desired wavelength, okay, from the beam of radiation. तो इसमें सब पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं रहेगा, इसमें बीम रहेगा. तो ये क्या करेंगे? पर्टिकुलर वेवलेंथ या फिर वेव नंबर सिलेक्ट करेंगे. और इसमें अगर दो टाइप का आता है, प्रिज्म मोनोक्रोमेटर्स एंड ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स. प्रिज्म मोनोक्रोमेटर्स एंड ग्रेटिंग. वर्किंग इज सिमिलर लाइक व्हाटएवर वी हैव सीन द कलरीमेट्री. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस टू. कलरीमेट्री में क्या होता है कि यू कैन यूज आइदर ग्लास प्रिज्म और ग्लास monochromators. Grating. So grating monochromators of prism both are made of glass in that case. In case of your UV visible. In case of UV, quads are there. In case of visible, glass is there. Now in this case, in case of infrared, so here glass and prism you cannot use. You have to use another material to make a prism. Glass prism यहाँ पे नहीं चलेगा, quads यहाँ पे नहीं चलेंगे. यहाँ पे क्या चलेगा? The material which is transparent to air. Material which is transparent to air, that means a material which will not absorb the IR radiation, so that only can be used to construct the all parts of IR spectrometer. IR spectrometer में ऐसे पार्ट का ही मटेरियल ऐसा ही रहेगा कि जो एब्सॉर्ब नहीं करता है क्या? IR रेडिएशन को. कौन से मटेरियल होते हैं? सो सॉल्ट ऑफ, ओके, मोस्टली सॉल्ट होता है. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, calcium bromide, sodium chloride. So these salt, okay, salt of halides, metal halides, only those material is used. Okay, question आता है उसके ऊपर. So in case of IR, all parts are made up from a salt of alkyl halides like sodium chloride, okay, then potassium bromide, okay, thorium bromide, etc. etc. So prism made up of alkyl halides is most preferably, chloride is the most commonly used for making the prism. Gratings also, prism monochromators are replaced by grating. Higher dispersion will be there. That is also made up of the same thing. Now sampling cells, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. सैम्पलिंग सेल्स इन आयर कि सैंपल कैसे लेंगे आप? ठीक है, सॉलिड सैंपल होगा आपके पास या फिर लिक्विड होगा या फिर क्या होगा? गैस होगा. तो आप गैस का आयर करना है आपको, या फिर सॉलिड का आयर करना है, या फिर लिक्विड करना है. So sampling cells, remember in case of IR, everything is made up from alkyl halides. So sampling cells, they are strictly made from IR transparent material like sodium chloride, potassium bromide, thorium bromide or metal halides which are transparent to IR. Question इसके ऊपर आता है. Sampling cell in case of IR spectrometer is made up of these material: sodium chloride, potassium chloride, sodium chloride, potassium bromide, thorium bromide,
मेटल हाइलाइट्स. ओके, मेटल हाइलाइट मतलब पोटेशियम हाइलाइट मतलब क्या, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन. ठीक है. सैम्पलिंग सेल मस्ट बी मेड फ्रॉम मेटल हाइलाइट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, थोरियम ब्रोमाइड. सैम्पलिंग में तीन टाइप का आता है आपका, सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड, सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड, सैम्पलिंग ऑफ gases. Now first sampling of solid. So if you have a solid sample, then how you can do the IR of that? So you have to prepare that sample. Now solid sampling can be done in solid run in a solution, then solid films, then mull technique, pressure pellet technique. आपके पास solid है तो वो solid आप क्या करो, solution में dissolve करो और उसका IR निकालो, या फिर क्या करो, जो आपके पास solid है उसका एक solid film डिपॉजिट करो और उसका IR निकालो, या फिर क्या करो, जो solid है उसको dissolve करो किसमें और फिर यूज करो उसको, या फिर आप क्या करो, जो solid है उसका एक pellet बनाओ. pellet मतलब छोटा सा टैबलेट होता है. So you have to make a pellet. Okay, then you have to do. Okay, so sampling of solid involves these four steps. So first one is a solid run in the sample. Now if your sample is dissolved in the organic solvent and no chemical interaction with the sample should be a drop of solution, drop of this solution. Okay, take a drop of this solution and drop it on a sampling window made up of a salt. कौन से salt? Sodium chloride वगैरह. That's how you can do sample. So sampling of solids, that is first one is solid run in the solution. Second one is a solid films. Sample in the solution is deposited on the surface of salt cell by subsequent evaporation of solution. That is a deposition of your sample as a solid film on the sampling cell made up of these solid films. Now mull technique, इसके ऊपर क्वेश्चन दो बार आ चुका है. What is mull technique? Mull technique, finely divided solid powder of sample is dissolved in the mineral oil, newjol oil, mineral oil or newjol oil, and thin layer of this now is applied on the window and you have to run the instrument. So that is a mull technique. mull technique के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Pressed pellet technique, pressed pellet technique. इससे एक्चुअली आई हैव डन ऑल दिस. मैं इंडस्ट्री में था, मुझे मालूम है ये आईआर का इंस्ट्रूमेंट, यूवी का इंस्ट्रूमेंट, एचपीएलसी, ये सब किया है मैंने. सिर्फ जीसी ऑपरेट नहीं किया है क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट में हमको जीसी का काम नहीं था. सो दिस प्रेस्ड प्लेट टेक्निक में यहाँ पे ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का पाउडर लेना है, उसमें आपको आपका जो सैंपल है वो डालना है, ग्राइंड करना है उसको, और उसके बाद में एक छोटा सा पेलेट बनाना है बाय यूजिंग a special instrument, by using hydraulic press. So that is known as pressed pellet technique. So sample under investigation is triturated with the KBr powder, potassium bromide powder, pressed into pellet by using pressure in the pelleting machine, just like your tableting machine. So known as a pressed pellet technique. So these are the techniques for solid sample. Now sampling of liquid. अगर आपका liquid sample है और उसका IR निकला है, so liquid sampling cells are available. So they are rectangular cells made up of again sodium chloride, bromide or thorium bromide. IR spectra can be obtained directly by using sampling cell. IR का जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसके साथ में सैम्पलिंग सेल भी दे देते और एक पोटेशियम ब्रोमाइड का बॉटल भी दे देंगे. While during performing the IR spectrum, your hand should be clean. You should not there should be, you have to avoid the moisture. जो भी सैंपल है वो सब ड्राई होना चाहिए, पूरा ड्राई. पहले तो पोटेशियम ब्रोमाइड ड्राई करो, सैंपल ड्राई करो, ड्राई करने के बाद निकालने के बाद इमीडिएटली उसको करो, बिकॉज इफ मॉइस्चर्स आर देयर इन द सैंपल, सो हाइड्रोक्सिल पीक विल बी देयर. हाइड्रोक्सिल आयन का पीक आता है उसमें, दैट विल इंटरफेयर विद योर नॉर्मल एनालिसिस. ओके, सो दैट्स व्हाई सैंपलिंग ऑफ लिक्विड. सो लिक्विड सैंपलिंग सेल आर देयर, दिस टेस्ट टू प्रेस होता है मेड अप ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड, थोरियम ब्रोमाइड. So when sample and reference spectra has to be obtained simultaneously, use double beam. और sampling of gases, जैसे liquid sampling cell होता है उस टाइप के sampling gases sampling cell होते हैं. Similar to liquid sampling, so उसका साइज होता है 1 मीटर into 10 सेंटीमीटर. sampling है अभी क्या है, ये sampling is known as this is a pressed pellet technique. pressed pellet technique ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं pelletized, ओके, हाइड्रोलिक प्रेस, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस. ठीक है, तो आपको क्या करना है, पोटेशियम ब्रोमाइड का पाउडर ड्राई करके लेना है, पोटेशियम ब्रोमाइड का पाउडर ड्राई करके लेना है, और आपका सैंपल जो है वो सैंपल भी ड्राई करके लेना है. सो यू हैव टू यूज 300 मिलीग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड एंड 1 मिलीग्राम ऑफ योर सैंपल. दिस रेशियो शुड बी देयर, 300:1.
ठीक है, उसमें ये रेशो होना चाहिए जो आपको करना है। और बाद में क्या करना है, जैसे मान लीजिए 3 ग्राम आपने पोटेशियम ब्रोमाइड लिया है तो 1 ओके तो 10 मिलीग्राम आपको आपका कंपाउंड लेना है और वो मिक्स करना है और वो पाउडर फिल करके ये जो डाइज वगैरह होता है इसमें डालना है और ये प्रेस करना है तो आपको एक ऐसा टैबलेट मिल जाएगा, राउंड शेप टैबलेट मिल जाएगा। नाउ दैट टैबलेट यू हैव टू प्लेस इन द IR सैम्पलिंग सेल एंड यू हैव टू ऑब्टेन द IR ऑफ दैट। और आजकल अभी ये सब टेडियस प्रोसेस है तो ये निकालने के लिए आजकल अभी क्या है, डायरेक्टली पाउडर करना है आपको सैंपल विद द KBR एंड एक छोटे छोटे माइन्यूट DRS नाम का एक नया पार्ट डाला है IR एस्पेक्ट। सो जस्ट अ वेरी फ्यू ग्राउंड करके आप जैसा KBR के साथ ग्राउंड करो, वो पाउडर डायरेक्टली लो और छोटे छोटे सैम्पलिंग सेल होते हैं उसमें डालो और वो रोटेट होते रहता है। तो एक साथ में आप 35-40 samples कर सकते हो by using diffused or replete. Now this is known as a liquid sampling cell. Second one is known as a liquid sampling cell. Liquid sampling cell will look like this. So this material is nothing but the ये बाकी का छोड़ो, ये जो अंदर का जो व्हाइट कलर का है, so this material is nothing but the sodium chloride or thorium bromide or potassium. Now in this case you have to pour your liquid sample in this, यहाँ से फिर IR रेडिएशन इसमें लिक्विड का एक थिन फिल्म बनाएगा, एब्सॉर्ब होगा नहीं होगा वो ट्रांसमिटेड इसमें। लेकिन अगर आपको गैसेस सैंपल है तो बड़ा वाला ऐसा टेस्ट जैसा सैंपलिंग से डिटेक्टर्स ओके। सो डिटेक्टर्स कौन से होते हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। फोटो कंडक्टिविटी सेल जनरली यूज फॉर नियर इंफ्रारेड बट देयर इज नो बेटर चॉइस दैट other than thermal. So mostly detector should be sensitive, should detect the transmitted radiations. So there are different kind of detectors like photoconductivity cell is there and thermal detectors are there. So photoconductivity cell is generally used for near infrared. There is no better choice than matlab thermal detectors are useful more. First one is a bolometer. First one is a bolta hai. First one is a bolometer. So it is based upon the fact that electrical resistance of metal increases approximately 0.5% upon increasing the temperature. तो ये क्या है कि जो मेटल्स होते हैं उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है कब, जब उसमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस approximately 0.4% by increasing the 1 degree Celsius temperature. This metal is made of one arm in this balometer. One arm is made from a Wheatstone bridge and balancing arm bridge. Normally it is balanced and when radiations fall on it, so there is a change in the electrical resistance which causes the current flow and that is denoted by galvanometer, that is then recorded and converted into। इसका मैकेनिज्म याद रखो, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लाइट जो है सैंपल से आएगा तो इसके ऊपर पड़ेगा वेस्टर्न ब्रिज के ऊपर एंड मेटल के ऊपर, सो दैट विल बिकम अ देयर विल बिकम अ फ्लो ऑफ करंट, देयर विल बिकम अ फ्लो ऑफ करंट। और सेकंड इज नथिंग बट थर्मोकपल। क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। थर्मोकपल based upon the principle that current will flow, two dissimilar metal wire are connected together at both ends and temperature difference between these two ends। ये दो metal wire होते हैं, they two metal wires they are connected together। थर्मोकपल मतलब क्या, कपल दो ही होते ना, कहीं एक सिंगल कपल होता है। थर्मोकपल there are two metal wires and end okay, at the both end and the temperature differential distance between two end, दोनों साइड में टेम्परेचर डिफरेंट होगा। Now one end is exposed to IR radiation. After IR radiation coming from the sample, this is hot junction. It is a hot junction. Another reason is insulated, known as a cold junction, which is usually black body. They are welded wire in a different semiconductor metal. Now when IR radiation will fall, so there will be generation of current. There will be generation of heat and that heat is converted into current. Now third one is a thermistor. So it is a made up of fused mixture of metal oxide। क्वेश्चन आता है थर्मिस्टर्स दे आर नथिंग बट थर्मोकपल में मतलब क्या, यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर एंड डिसिमिलर वायर जो होगी सेमीकंडक्टर welded। Now thermistor में it is made up of a fused mixture of metal oxide। As the temperature of mixture increases, electrical resistance decreases exactly opposite to the balometer। Now last fourth one is a गोले सेल। ये आपको नाम याद रखना है, बैलोमीटर, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, गोले सेल। दीज आर द डिटेक्टर फॉर। तो यूवी के लिए कौन सा था, यूवी के लिए था आपका
फोटो कंडक्टिविटी सेल, वहाँ पे एक था, और सॉरी वहाँ पे, हाँ वहाँ पे एक फोटो वोल्टेरिक सेल था, यहाँ पर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब था। सो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द यूवी स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पे ये कौन से बैलोमीटर, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, गोली सेल। और गोली सेल क्या है, जनरली यूज्ड एज अ used in the several spectrophotometer. Gold cell consisting of metal cylinder closed up of blackened metal plate, one end by flexible metallized diaphragm. इसका आप बाद में पढ़ लेना if you want. तो radiation when fall on this reflect the light on photo cell motion. ठीक है, आप बाद में इसका मैकेनिज्म पढ़ लेना, तो याद रखो गोले सेल होगा। नाउ फोटो कंडक्टिविटी सेल, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। नॉन थर्मल रिलेटर, फोटो कंडक्टिविटी सेल क्या है, नॉन थर्मल रिएक्टर। थर्मल रिएक्टर कौन से, पहले वाले बैलोमीटर, गोले सेल, थर्मिस्टर्स, थर्मोकपल, जो चार है तब, ठीक है, थर्मिस्टर, थर्मोकपल, गोले सेल एंड, तो ऑल दीज आर थर्मोकपल्स। नाउ द फोटो कंडक्टिविटी सेल रिएक्टर, it is a non-thermal conductor, thermal detector, and with a great sensitivity, composed of a thin layer of lead sulfide or lead telluride, lead telluride, supported on a glass and enclosed in the evacuated glass. A photo conductivity. Seventh is semiconductor detectors. They are not a conductor usually, but when IR radiation falls on them, they become a conductor, and that is the basis for their working, and has a very rapid response to IR signal. Then next one is a piezoelectric detector. Piezoelectric detectors. A dielectric placed in an electrostatic field become polarized. Depending on the dielectric constant, the field is removed and polarized normally disappears except ferroelectric compound, which retain a strong receivable polarization. Sometimes this initial polarization is a temperature sensitive. Such material is polaritic. This is the temperature range. When there is a temperature range, higher radiation falling on it. These substances, the common type of this is a glycerin sulfate. Glycerin sulfate TGS detector. Piezoelectric compounds क्या होते हैं? A dielectric, when a dielectric is placed on the electrostatic field, it will become a polarized depending on the dielectric constant of that material. If the field is removed, polarization disappears except in a piezoelectric compounds. जो piezoelectric compounds है उसको अगर डायरेक्ट फील्ड में डालेंगे तो उसका पोलराइजेशन होगा, जब निकले तो उसका पोलराइजेशन डिसअपियर नहीं होगा. सो दिस इज द बेसिस. नाउ कैलिब्रेशन ऑफ आईआर इज डन यूजिंग पॉलीस्टाइरीन. तो कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, पॉलीस्टाइरीन फिल्म से करेंगे. क्वेश्चन आ चुका है. कैलिब्रेशन ऑफ आईआर इज डन बाय यूजिंग polystyrene films. There are two types of instrument, dispersive IR and Fourier transform IR spectrometer, FTIR. तो FTIR इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें एक्सपेंसिव होता है एंड उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होता है. FTIR आजकल जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो सब FTIR या पहले वो डिस्पर्सिव वाला. एप्लीकेशंस क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसका फिंगरप्रिंट रीजन में एक पर्टिकुलर पैटर्न आएगा पीक का. अगर आपके पास सैंपल आया है तो यू कैन चेक दैट. So quality control for that. Identification of substance for the reaction also. Reaction progress stability, उसमें सब reaction progress synthesis में IR के ही बेसिस पे चलता है. जैसे मान लीजिए कोई सिंथेसिस किया, पहले उसका IR निकालना पड़ता है कि वो कंपाउंड है या नहीं. So comparison of IR spectra of standard and IR spectra of sample, large number of identical binds will be there. That is for identification. इन टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइलिन्स. ये तीनों भी क्या है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइलिन्स. दे विल हैव अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम, दे विल हैव डिफरेंट पीक्स. सो यू कैन आइडेंटिफाई by using IR spectrum. टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. तो एल्डिहाइड जो है वो 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर पीक दिखाएगा एंड परमिटेड इनवर्स दिखाएगा. कीटोन दिखाएगा आपको 1720 इनवर्स सेंटीमीटर. कार्बोक्सिलिक एसिड उससे to distinguish between primary, secondary and tertiary amines. That is also again an application of your IR spectrum. Determine the molecular structure and studying the progress of reaction. Detection of impurity to distinguish between geometrical isomers, rotational isomers, functional group isomers. Applications like determination of purity, germination, whether that is germinal or vicinal proton. Symmetry of molecule presence of water in the sample. Okay, moisture content के लिए भी use करते हैं. Measurement of paint and
वर्निशेस। लास्ट होता है आपका कंपैरिजन बिटवीन डिस्पर्सिव आयन फूरियर ट्रांसफॉर्म आयन, तो वो आप जाके बुक में पढ़ लेना। तो ये होता है कोरिलेशन चार्ट्स। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे एब्सॉर्प्शन दिखाएगा। फिंगरप्रिंट रीजन कितना होता है 500 टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें क्या क्या आता है फिंगरप्रिंट में, तो यहाँ पे टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। सो कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है फिंगरप्रिंट रीजन में। फिंगरप्रिंट रीजन इज द फॉर आइडेंटिफिकेशन, सो रेंजेस फ्रॉम 500 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, 1620 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1850। इसमें सब कार्बोनिल बॉन्ड, साइनो बॉन्ड, टी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, तो उसका स्ट्रेचिंग आएगा यहाँ पे। कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन साइनो कंपाउंड का स्ट्रेचिंग एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का स्ट्रेचिंग, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेचिंग, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेचिंग आएगा 2300 सेंटीमीटर इनवर्स टू 21 सेंटीमीटर इनवर्स। तो दिस रीजन फ्रॉम 1500 सेंटीमीटर इनवर्स टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये जो रीजन है उसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, सॉरी उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। जो पहला रीजन है उसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, 500 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। सो दिस इन दिस रीजन 3600 to 2800 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें कौन से पिक आते हैं, OH ग्रुप का पिक आएगा, नाइट अमाइनो का पिक आएगा, ये सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग आएगा इसमें। सो सिंप्लीफाइड कोरिलेशन चार्ट, इसको बोलते हैं कोरिलेशन। आफ्टर स्टडीइंग अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स दे हैव मेड दिस, बहुत सारे कंपाउंड का आया स्पेक्ट्रा स्टडी करने के बाद में इन्होंने कुछ जनरल अजम्पशन लिखे कि CH का स्टेज किस किस में आएगा, CC, ठीक है। CH स्टेज, कार्बन हाइड्रोजन स्टेज आता है आपको उस रेंज में 3,000 to 2850 सेंटीमीटर इनवर्स। CH3 बैंड आएगा उसमें 1450 to 1350। CH2 का बैंड आएगा 1465 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आप बाद में देख लेना, ठीक है। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेचिंग आएगा आपको not interpretively useful, CC alkene में है। C double bond C alkene will give you peak in this 1680 to 1600, aromatic वाले देंगे 1600 to 1475, ओके। alkene देगा 2250 2100 सेंटीमीटर इनवर्स। सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सो अल्डिहाइड का स्टेज आएगा आपको इस रेंज में 1740 to 1720, तो उसमें पर्टिकुलरली उसका आता है 1680 16 से ऐंशी लाल लेड। कीटोन का आता है आपको 1725 to 17 से 5 ते 17 से 25 मध्ये कीटोनचा आहे, क्वेश्चन येतो आहे यावरती 100% येतो। कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है 1700 to 1725। ईस्टर्स, अमाइड, अनहाइड्रेट अल्कोहल, ये सब बुक में भी है, बाद में आप देखेंगे। अल्कोहल ईथर ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का CO स्टेज का आप आता है 1300 to 1000 to 1300। OH ग्रुप, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री अल्कोहलिक ग्रुप है, सो इट विल गिव अ स्टेज, इट विल गिव पीक स्टेचिंग पीक एट 3650 to 3600। हाइड्रोजन बॉन्डेड अगर अल्कोहल है तो वो 3400 3200 सेंटीमीटर। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो 3400 to 2400 सेंटीमीटर इनवर्स। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोक्साइड ग्रुप, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ चुके हैं इसको। ये अमाइनो ग्रुप के ऊपर भी 3300 में आता है। अमाइनो जो है 3300 या 3500 के आसपास स्टेज आएगा आपका 3300, बैंड आएगा आपका 1550 to 16। ये आप बाद में देख लेना, दिस इज नोन एज अ कोरिलेशन चार्ट। इसका पिक कहाँ पे आता है उसका रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंस है, ये भी दिया है मैंने बुक में, तो पढ़ लेना आप। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, जीपैट के लिए जितना इंपॉर्टेंट था वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, चैप्टर इज फिनिश्ड। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई विल हैव टू लीव।